Hello everyone. बेसिकली जो ये इंटरेक्शन है ये मैं बहुत दिनों से करना चाहता था क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट समझ चैनल में बहुत दिनों से मैंने कुछ इंगेजमेंट के लेवल पे कुछ नहीं किया है। आप तो कुछ वीडियोस आप यू कैन फाइंड आउट वहाँ पे आप देखोगे कि डिसेबिलिटी से related बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। बट मेरा पर्पस ये जो पॉडकास्ट ये जो लाइव करने का है इज टू मेंटेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द व्यूअर्स। और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ और उसके वजह से हो सकता है कि आई मे नॉट fully be professional in that sense, but apart from that I feel इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं अपने चैनल के बारे में बताऊं और ख़ासकर मैं अपने बारे में भी, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अगर कुछ भी कंटेंट में यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो उसको सिस्टमैटिक वे में डालना बहुत ज़रूरी है। और मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटिवेशन क्या है, वो ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए। तो ये जो पॉडकास्ट था बेसिकली पॉडकास्ट नहीं, सॉरी, इट इज अ लाइफ। तो obviously I'm getting nervous in that way, but anyways I'll try again। तो जो ये जो ये लाइव है इसका ये पर्पस है कि मैं अपना जो चैनल है उसके पर्पस के बारे में बता सकूं और साथ ही साथ मैं अपने बारे में भी बता सकूं कि मैं एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड क्या है और where I see this channel going actually, and what are my plans regarding that। तो ये जो इंटरेक्शन होगा ये बाइलिंगुअल होगा। I'll be keep switching between Hindi and English, that is my comfortable language to speak with। तो आई फील ये जो लाइव है आई थिंक लंबा चलेगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल, बिकॉज बहुत बार जब आप स्मॉट स्मॉल वीडियोस बनाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कुमार महावीर है, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के टाइटल में देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं देवघर झारखंड से हूँ और बेसिकली मैं तकरीबन आपका 27-28 साल का हूँ। तो और इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो देवघर से की है। और उसके बाद मैं 11th and 12th के लिए मैं तमिलनाडु में गया, स्पेसिफिकली कोयम्बटूर। सो आई डिड माई 12th देयर। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स किया है फ्रॉम अ डिस्टेंस एजुकेशन university called IGNU। I think most of you must be knowing about Indira Gandhi National Open University। तो और उसके साथ ही साथ last but not the least, I have done my masters in urban policy and governance from TIS Mumbai। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू स्टेट कि आई हैव अ डिसेबिलिटी। इसलिए आप ये देखोगे कि इस चैनल पे आप बहुत सारे कंटेंट में आप ज़्यादातर कंटेंट में अभी तक जितने भी कंटेंट्स आए हैं उसमें डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन है। तो एक उसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं जो है मतलब कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली दैट हैज़ गॉन इनटू द थिंग्स ऑफ
choosing the content for the channel. तो मेरा जो डिसेबिलिटी है वो हेमप्लीजिया है, एंड हेमप्लीजिया स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड में है, विच हैज इम्पैक्टेड माय लेफ्ट left hand and left leg. And also I have, in certain moments of this thing, I also have issues with my speech, which might reflect in this live session also. So I'll be fully transparent in that sense. तो पहले मैं अपने बारे में कुछ एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि कमिंग टू माई डिसेबिलिटी, जब मैं 6 महीने का था, तो आई एक्चुअली हैड अ फॉल फ्रॉम द बेड. इट वाज अ हाई बेड एक्चुअली, एंड आई गॉट हिट इन माई right side of the head, and which sort of impacted my left side, and it basically लकवा मार गया. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, और इंग्लिश में पैरालिसिस. तो वो लेफ्ट साइड का इम्पैक्ट होने की वजह से, तो इनिशियली इट वाज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज till the age of 4 to 5 years I was not able to walk properly, and actually took a lot of therapies and patients and physiotherapy to actually got me actually standing and walking eventually. तो ऑब्वियसली तो माई डिसेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अर्ली ऑन है, और मेरा लाइफ के डिसीजंस को भी वो बहुत हद तक शेप किया है. अगर मैं बात करूं अपने, तो बेसिकली व्हेन आई वाज लाइक बिफोर द स्कूलिंग पीरियड, ऑब्वियसली दैट वाज अ चैलेंज, एंड मैं अपने पापा के साथ रहता था, एंड due to some reason I actually, it's a personal reason, and I had to move to Munger actually. First of all, I was born in Bhagatpur, which is a city in Bihar, where I was born. उसके बाद due to some personal reasons I had to go to like Devghar actually, and उसके बाद नहीं, देवघर का तो सीन बाद में आता है. फर्स्ट वाज एक्चुअली टू मुंगेर एक्चुअली, वेयर माय फादर वाज प्रोफेसर. तो वहाँ पे मेरा एक सीन था कि ऑब्वियसली आई वाज द ओनली किड इन द यूनिवर्सिटी, एंड उसके वजह से मेरा ये होता था कि ऑब्वियसली my father used to take me to the universities, but he couldn't take me to classes, so he used to leave me in libraries. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो जो अर्ली चाइल्डहुड रहा है वो इट वाज शेप्ड बाय ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, इन दैट सेंस कि जो जनरली, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यू टू माय डिसेबिलिटी आई डिडंट join any schooling as such early on, and it जब तक मैं लगभग 8 साल का नहीं हो गया, तो आई वॉज नॉट एक्चुअली इन अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. एंड उससे पहले जितना भी मेरा एजुकेशन हुआ है वो मतलब कि वही स्कूल के लाइब्रेरी में, और स्कूल के ये कॉलेज के पापा के कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई है. और आई फील वो लाइब्रेरी था उस यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअली शेप माय अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ल्ड व्यू एक्चुअली इनिशियली. तो ऑब्वियसली ड्यू टू माय डिसेबिलिटी, मतलब कि, और फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मेरे एज के जितने भी कोई लड़के नहीं थे, सो आई वाज द ओनली किड, apart from few exceptions, like obviously because it was a residential university, so my father was allowed to keep me, but again there were like one to two few, you know uh, like professors who had that privilege, but again I didn't
you know, got the chance to mingle with the kids. And even though if अगर कोई कोई होते भी थे तो I was not even actually uh, very much into socializing with people. So eventually, obviously, my disability was also a reason why I remained to myself, and actually in that way I was not shy kid. I was always happy and curious to learn things, but again बहुत सारी वजह से मैं आई प्रेफर नॉट टू टॉक टू पीपल. तो मेरा जितना भी टाइम स्पेंड होता था, इट वाज मोर इनटू द स्टडिंग थिंग्स एंड रीडिंग बुक्स. एंड आई एक्चुअली मेरा जो escape था, I found that in the books actually. And there were, obviously I started with the kids section. तो उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब आप sort of interest में लाता है. But obviously I started with the kids section, which comprised of Tinkle Digest, Amarjit Katha, and obviously sciencey stuff also, but in a more like sci-fi, it's like scientific fiction way. So it was not very rigorous, but at the same time, due to that thing, मेरा जो एजुकेशन और मेरा जो फॉर्मल एजुकेशन का जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली में बहुत ही अलग तरीके से हुआ, एंड वाज वेरी इनफॉर्मल इन अ वे. And in that way I would say that my first teacher was the librarian of that library, जो मेरे को like basics ABCD and how to read the sentences. Actually she played a part, and obviously whatever I gained out of that was actually very very informal way it was. I never actually was able to like गो टू द स्कूल और अंडरस्टैंड कि वहाँ का जो ट्रेनिंग होता है वो उस ट्रेनिंग में कभी मैं रहा नहीं. तो बट एट द सेम टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पे जितने भी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो बहुत ही इनफॉर्मल वे में हो रही है, और बहुत लाइक इट वाज नॉट वेरी ग्रेडेड वाइज. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सरी में हो तो यू आर सपोज टू रीड certain thing only actually, but because I didn't have that demarcation, तो बहुत बार मैं अपने like गेट के ऊपर भी चीज़ों को मतलब कि पढ़ता था, and I used to read about the things, and that was something very natural, and nobody stopped me to do explore obviously. And that was obviously a very good thing actually retrospective when I find out that helped me a lot to open my minds and not to think in structures actually. बट उसके साथ साथ मैंने ये भी रियलाइज किया कि जब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो आई वॉज intellectually or maybe academically, maybe I was getting this fulfillment of reading things and finding joy in reading things and books. But at the same time, social level, I was uh, very lonely in that way, and I didn't had many uh, people to discuss my ideas and things. तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो ये रियलाइज हुआ कि आई हैड टू गो टू द स्कूल एक्चुअली, बिकॉज मैं मेरे जितने भी भाई थे, कज़न, मेरे भाई ब्रदर्स जितने भी थे, तो दे वर गोइंग टू स्कूल्स, एंड ऑब्वियसली आई फेल्ट दैट कि क्योंकि बहुत बार आप पढ़ने से अगर आप शेयर नहीं कर पाते हो किसी से तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ वॉइड. तो वो चीज़ की वजह से मैं जब 8 साल का हुआ तकरीबन तो मैंने पापा से बात की कि आई वांट टू गो टू द स्कूल एक्चुअली. एंड obviously that was a big change, because obviously my father was apprehensive about my
disability and my ability to actually cope up in a school. But ये चीज़ आपका मैं बोलना चाहूँगा जब बाकी बच्चे ऑब्वियसली when they start schooling they actually are reluctant to go to school, but because मेरे केस में मैं I was around 8 years old and I found that कि I was not getting the company and my peers, so I had to actually demand that कि मेरे को स्कूल जाना है। कुछ नहीं तो कम से कम एक आई नीड अ ग्रुप ऑफ पीयर्स whom I can शेयर माय थिंग्स एंड रिलेट विद दैट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे यूनिवर्सिटीज में तो वो दे वर ऑब्वियसली they loved me and in a way they cared about me, but I couldn't relate with them, and obviously it was a very limited kind of interaction I would have. And obviously by that time I developed this habit of debating and talking to people, और ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इवॉल्व कर रही थी। इट वॉज नॉट अ बैड थिंग, बट अगेन सोशल, अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूं या फिर इंटरेक्टिंग विद द पीयर्स, दैट वाज अ लिमिटेशन। तो ये दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू चेंज। तो ऑब्वियसली देन आई tried to convince my father, and then he actually tried to find few schools, but again because my disability was a hindrance, and most of the schools told that कि क्योंकि आपका disability है तो who will take responsibility for you and आप कैसे मैनेज करोगे बेसिकली। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लेट अस गो टू द गो टू देवघर, बिकॉज मेरे जितने भी ब्रदर, मेरे भाई और मेरे जितने भाई हैं वो वहाँ पे पढ़े थे। तो ऑब्वियसली आई फाउंड दैट कि वो वहाँ पे मतलब कि मेरे को मेरे भाई का भी सपोर्ट मिलेगा, मेरा फैमिली भी है वहाँ पे, तो दैट वाज अ सेफ ऑप्शन। आई थॉट दैट कि दैट वुड बी नो मोर बेनिफिशियल फॉर मी, है ना। तो मैं ऑब्वियसली 2000, ये तकरीबन बिकॉज it was around 2001 to 2000 when I actually went to Devghar to search for school and schooling options. तो अगेन वहाँ पे भी मेरे को जो बड़े स्कूल्स थे, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट अगेन जो बड़े स्कूल्स थे वो उन्होंने मतलब कि यही बोला same, कि अगेन हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड सम इफ यू fall down, then who will actually take care of you, and और दूसरी बात क्या है कि ऑब्वियसली मेरा disability was improving in a way with age, but again I had problems with climbing stairs and things like that, and limping was an issue. तो ये बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे, और वहाँ पे ऑब्वियसली उस टाइम में आई वुड से दैट कि एक्सेसिबिलिटी का उतना अवेयरनेस नहीं था। इट वाज वन बैक इन वन इन लाइक देवर, इट वाज नॉट सो मच ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वो कंसर्न भी नहीं था। तो देन आई एक्चुअली tried to find schools which was actually in near proximity, जो आई थिंक मतलब कि मैं आसानी से जा सकूँ 1-2 किलोमीटर के अराउंड। तो आई फाउंड दैट कि देयर वाज अ स्कूल नेम देवर सेंटर स्कूल व्हिच वाज रिसेंटली ओपन, एंड वहाँ के जो ऑब्वियसली द फैकल्टीज वर न्यू एंड इट वाज अ न्यू सेटअप एक्चुअली। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया क्योंकि मेरे घर के भी नज़दीक था, तो दैट वाज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। तो फॉर्चुनेटली वहाँ पे जब मैं गया तो दे वर ओपन अबाउट दैट कि we don't mind admitting, but the thing is that कि the classes will be on first floor, and क्योंकि आपका मतलब कि फर्स्ट फ्लोर में जाने में आपको स्टेयर्स में दिक्कत होगी, तो will that create a problem? Then I found out that कि then I met with the principal, and
and the principal of that school was very काइंड इनफ टू से दैट कि जब तक आप यहाँ पे हो आपका जो क्लास है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेगा एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो अप. तो दैट वाज अ वेरी चेंज बिकॉज अभी तक मेरे को जितने भी स्कूल्स थे वहाँ पे डायरेक्शन मिल रहे थे बट जैसे जैसे मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने बात की वहाँ का जो अप्रोच था वो अलग था. और दूसरी बात ये थी कि ऑब्वियसली जब तक मैं 8 साल का हो गया तो आई वॉज मोस्टली अवेयर अबाउट द बेसिक्स ऑफ like for example it was very easy for me to crack the test and all. So academic से मेरा it was not a hindrance for anyone to admit me, but again it took some time to adjust. And initially कुछ teachers को apprehension थे, but then I proved my academic credentials and all. तो अगेन तो इसके वजह से एक चीज हुआ मेरे साथ कि आई वॉज ऑब्वियसली फिक्सेटेड टूवर्ड्स द एकेडमिक साइड बिकॉज वही एक डोमेन था जहाँ पे मेरे को रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव फीडबैक मिलता था. एंड when it came to like other sites I never tried to uh, get into. तो सो तो मेरा एसोसिएशन जो एकेडमिक बिजनेस में था कि चलो इसी कम से कम इस डोमेन में समथिंग आई कैन do something and I will not be bullied, or like in a way I was never bullied in the sense previously also, but I never ventured into those things. So perspective में I would say that was obviously not a good thing, but again उस समय because I didn't have that option, so I took that as it is. So obviously I was doing good in like grades and classes, and obviously मेरे जितने भी दोस्त थे वहाँ पे जो बन रहे थे it was due to my academic credentials. Not I'm not very sure कि how appealing I was, but again I was a popular kid in that way because obviously मेरी जो पढ़ाई थी, because I was obviously mature, much more mature than my contemporaries in my class. So obviously I could understand things much better. And so, but after some time I realized कि nursery and KG is actually not the correct standard for me. And obviously बहुत चीजें थी जो already मेरा basics clear था. तो then the teachers decided that I should be promoted to class 1. और क्लास 1 में जो प्रमोशन के बाद भी जो था वहाँ पे क्लास 1 में प्रमोशन के बाद भी आई वाज ऑलमोस्ट 2 years elder to माय क्लासमेट्स. तो 2 साल मतलब कि प्रमोशन के बाद भी आई वाज not at par with my age groups. So that was also a thing. So but again I started accepting that and started studying, focusing on studies. And obviously in the time actually I made some good friends also. Even मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारे वहीं पे बने. और आई थिंक अभी तक आई चेरिश few of them, and they are very, because obviously जब आप स्कूल में फ्रेंडशिप बनाते हो बिकॉज वो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स में आप बनाते हो एंड यू आर वेरी open about things, and they know you much better in formative years, and they can relate in a way that they can see your growth actually eventually more. So I am fortunate that I got some friends eventually, and obviously I was a popular kid, but एक distance था. I would say, I would not lie.
obviously there was a factor that ki, apart from the academic domain, I was, never, uh, you know, आई फेल दैट कि इट वाज मोर ऑफ द एकेडमिक मैं अगर पढ़ाई में अच्छा रहूंगा तभी मेरी मेरी दोस्ती बनेगी तो ऑब्वियसली मेरा जो एसोसिएशन था उनके साथ इट वाज मोर ऑफ एकेडमिक academic then from a equal level so obviously but at the same time at that moment that was enough for me because I was getting the required you know gratification and validation from them and obviously I was also contributing and that made me feel happy and fulfilled in that way तो या तो एक टाइम आया कि I started enjoying school days and obviously I started enjoying school days and to that extent that कि I was looking forward every day to go to the school and do my thing and move forward and तो वो चीज़ उस समय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे सोशल कॉन्फिडेंस के ग्रोथ के लिए और फिर जब मैं 10th क्लास मैंने जब वहाँ से पास किया तो मैंने वहाँ पे obviously it was emotional thing for me because again that school gave me the identity and whatever it was I would not deny that ki whatever pluses and minuses it was there but the teachers and the classmates were very uh, accepting and उस समय जब आप बड़े होते हो तो आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि there is a thing called discrimination because again it was something which was not very apparent for me. Obviously, I had some challenges. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा मेरे डिसेबिलिटी के एस्पेक्ट से कि obviously when it came to like using toilets, going to the rooftop and going to higher classes, I realized कि वहाँ पर accessibility ना होने की वजह से एक challenge तो था and I remember I never used to use toilets actually because it was inaccessible and obviously dirty. So I'm always made sure that key I never use the toilet, school toilet for that. But that was never a defining factor for me and a factor which hindered me um, mm, to socialize with the students in that way and classmates. They were never uh, thing which held me back because again अगर आप and at that moment मैं याद करता हूँ कि I was very systematic and very routine oriented and मैं सुबह 5 बजे उठता था फिर टाइम पे खाता था टाइम पे लाइक आई वॉज वेरी structured in that way so it didn't cause any trouble in that way so obviously at that time I was इवन दो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे वहाँ पे जहाँ पे मेरे को ये रियलाइज होता कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ समथिंग बट इट डिडंट अफेक्टेड माय कॉन्फिडेंस टू दैट क्योंकि ऑब्वियसली जो लार्जर एक्सेप्टेंस था टीचर कम्युनिटी के साथ और स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स सर्कल अच्छे थे तो आई नेवर हैड दैट प्रॉब्लम विद you know having inferiority complex like that was never the case and in fact eventually when I grew up I also participated in various co-curricular activities like debate competition and speech competition and things like that तो वो चीज़ों में मैंने अपने आप को है ना कोशिश किया obviously but again there I found out that I have some issue with public speaking again क्योंकि इनफैक्ट अभी भी मेरा जो ये हो रहा है there is a tinge of nervousness to me because मेरा एक and that goes far back to the school days actually जहाँ पे मेरे को पब्लिक डोमेन में बोलने में अपने आप को एक्सप्रेस करने में
it made me awkward. So that was the first thing which I found that yeah, I'm something which I can improve on practice. But again, that was a thing which was a challenging thing for me. And in fact, I was good at one-to-one conversation or classroom conversation, but when it came to like larger audiences, तो वहाँ पे मेरे को nervousness होती थी. Um, but again, because that was not a defining aspect of the schooling, क्योंकि बहुत बार आप एकेडमिक जब आप 10th और मतलब कि स्कूलिंग में आप जब जाते हो तो वहाँ पे मार्क्स मैटर करता है rather than other things. Obviously, when I compare that to the current schooling thing, जहाँ पे आपको ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा डायनामिक बनाने का और चीज़ों में आपको जज किया जाता है, ऑब्वियसली इन दैट वे आई वुड नॉट हैव सरपास मेनी ऑफ द थिंग्स. बट क्योंकि उस समय एकेडमिक एस्पेक्ट ज़्यादा मतलब कि मैटर करता था, तो इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी टू हैव दैट. तो अगेन दैट वे आई रियलाइज कि चलो ठीक है, 10th हो गया मेरा. एंड उसके बाद मेरे बड़े भैया हैं जो कोयम्बटूर में थे, ही वाज अ डॉक्टर देयर. तो ही टोल्ड मी दैट कि व्हाई डोंट यू कम टू लाइक कोयम्बटूर एक्चुअली एंड हैव द एक्सपोजर एक्चुअली, क्योंकि आप can you should see the world also. So obviously I was very confident also, and I decided that it's good to go to that place. And I shifted to Coimbatore. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस गुड एंड बैड एंड then evolving happened there actually, because Coimbatore was a place where I faced problems. And वहाँ पे obviously I started to understand me better actually, because वहाँ पे लोग जो थे, cultural difference था, that was not a issue, because my sister-in-law was also coming from a Telugu household, so that was accepting the diversity was never an issue. But again, when it came to like schooling, and वहाँ पे जो मेरे peers थे, they didn't know me about me, and they didn't know about my capabilities. So again, to establish myself where people didn't know me, it was a struggle actually. Obviously preconceived notions थे लोगों के कि क्योंकि ये disabled है तो how much he will be able to like contribute, or how he manage himself. That was a thing. But again, I would say that कि initially मेरे को प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे. मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट, बिकॉज आप जब 10th तक आप उतना प्रैक्टिकल नहीं करते हो इन दैट वे. एंड ऑब्वियसली आई हैड टेकन साइंस स्ट्रीम इन 11th एंड 12th, तो उसके वजह से जो मतलब कि आपका जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है 10th तक आपका उतना इवॉल्व नहीं करता. ऑब्वियसली प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है उतना मैटर नहीं कर रहा था 10th तक. उसके बाद जब मैं 11th एंड 12th में गया, तो वहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लैब में करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, आप केमिस्ट्री लैब में जब जाते हो तो आपको मतलब कि पिपेट से मतलब कि केमिकल लेके वेरियस टेस्ट करने पड़ते हैं. और फिर आप जब फिजिक्स लैब जाते हो तो उसमें बहुत सारे वेट्स एंड मेजर्स की में आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है. there was some that was something which was new for me, and that I found actually face issue in adopting to that kind of thing. And I obviously it affected my self confidence also. And in that way that I started doubting myself. And because again,
I was also having issues with forming friends. तो वो एक आइसोलेटिंग मतलब कि एक्सपीरियंस था मेरे लिए. एंड देन आई रियलाइज कि चलो यार मतलब कि अगेन आई went into the books actually. And again, that was my coping mechanism to hide certain things. कि चलो यार किसी चीज में अगर नहीं हो पा रहा है तो लेट्स नॉट think about it, and think about the other things actually. So I started reading novels, books again, because I was always fascinated with books and new things. तो वो चीज़ मैं स्किप हो जा वहाँ पे. तो इवेंचुअली मेरा वहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर भी हुआ. इट kept on improving, but again it was never to that level that where I could be satisfied that yeah, now I have this. तो ये जो मेरा फैसिनेशन था टुवर्ड्स मार्क्स एंड टुवर्ड्स एकेडमिक ब्रिलियंस, अगेन आई फाउंड आउट दैट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एकेडमिक ब्रिलियंस शायद से नहीं आप कर पा रहे हो, तो देन आई माय perception and my understanding changed. And by that time I was also reading a lot of things, and I got the access to internet, and where I and that was time around 10, 11, 12, I think. So that was a time when in the movement, in fact, it was one of the anti-corruption movement which actually uh, was in headline, and most of the leaders were in the headlines. तो वो सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा था. तो तब मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई कि बहुत सारी चीज़ें आप थियोरेटिकल डोमेन में आप नहीं समझ सकते हो. आपको फील्ड में जाना पड़ेगा. आपको अलग अलग चीज़ों में आपको है ना, how society works and how society accepts you and things like that. And political issues में मेरे को इंटरेस्ट आया. And obviously and that was escape again, kind of, because again I was not doing great at academics again, so it was escape for me. तो जब मैं वहाँ पे जब मैं ये सब चीज एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि उससे पहले तक most of my expectation was that I will go into the science field or medical field, because I had biology actually following, because my father was actually a biology professor, so obviously I was tilted towards that. So obviously I was good at theories and things like that, but again I faced issues with practical, and then I realized if I go into the medical field, or the research of those things, actually I have to do a lot of practical stuff, which was again, it's not, I'm not that saying that it should not have been done, but again at that moment, because my mindset was obviously not very optimum at that level, and I didn't had get that validation from others. So I decided that it's better to go into a field which is not that much practical oriented, or like where precision of hands is very important. Your movements and your things, it's very important. You have to be precise. And because I faced that कि जब मैं practical जब मैं करता था फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, I had to, due to my disability, I had to you know मतलब कि had to face challenges actually, जहाँ पे मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था. एंड जब बाकी लोग बहुत ही एफिशिएंटली करते थे, आई बिकॉज आई हैव अ क्लॉड हैंड, तो इट वाज I was having issues with holding things and you know performing things in a perfect way. So that was the first टाइम आई रियलाइज कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर सकते हो. तो
एंड दैट उसके साथ ही साथ मैं जब बाकी चीज़ें देख रहा था तो आई आई अंडरस्टूड दैट कि आई इट्स बेटर दैट कि आई स्विच my stream actually to from science to like arts because political science में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था बहुत सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को पढ़ने में और and obviously and I was also wanted to also understand the social uh, phenomena actually and that was the initial trigger for me to investigate and go into the arts field. So then after this actually I chose to go to the arts field and obviously there were people who said that कि आप तो साइंस फील्ड में हो आप why you are choosing art because again लोग जो है मार्क्स और एक्सीलेंस को स्ट्रीम्स में डिवाइड करता है इफ यू आर गुड एट एकेडमिक्स यू आर सपोज टू टेक साइंस एंड ऑब्वियसली फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो बहुत कम आता है एंड आर्ट्स वाज कंसिडर्ड अ लेसर थिंग तो उस समय तो मेरे लिए ये था कि मेरा जो इंटरेस्ट जो इवॉल्व कर रहा था and with the feeling of separation and alienation I understood that how it is how it is important to talk about people who are not included actually तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा चेंज ऑफ परसेप्शन था कि 10th तक क्योंकि मेरा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस था वो सब्सिडाइज या फिर लाइक कवर कर रहा था मेरे कमियों को in 11 and 12 that was exposed in a way and I didn't like that I always had this perception that I'm good at certain things and I'm good and that shaped my worldview from the beginning but again I realized that I have to go into a field which where I can actually contribute. So political science appealed me, and to some extent, history and civics, and that also relates to my 10th, schooling experience also because I was good at academics in general also, but I was not very particularly good at maths. And I was good at science, but I was not good at maths. So something, ये भी एक deciding factor था because I didn't had maths and मेरा जो रुचि था वो मैथ्स के प्रति उतना नहीं था तो मैंने नॉन टेक्निकल एंड सोशल एस्पेक्ट और ये सब चीज़ों में पढ़ने एंड थ्योरीज में अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाया और दैट ऑल्सो determine what I chose, what I wanted to do in the academic field or stream. तो जब मैंने स्विच किया तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीज़ें थियोरेटिकल अंडरपिनिंग्स होती है जो कि आप एज अ आर्ट्स स्टूडेंट शुड बी नोइंग एंड obviously I scored well in the 12th but again I had this thing कि अगर आप आर्ट्स में स्विच कर रहे हो तो कौन से कॉलेज होना चाहिए तो obviously my first preference was Delhi University obviously तो I applied there and I got into some of them but वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए क्योंकि दैट वाज अभी तक आई वाज इन द सिक्योरिटी ऑफ द होम एक्चुअली पहले मैं अपने घर में रहता था उसके बाद मेरे भैया के साथ में रहता था तो वहाँ पे सबसे बड़ा रीजन फैक्टर ये था कि दिल्ली में आई वाज नॉट हैविंग माय रिलेटिव्स एंड तो वो चीज़ मेरे बाबा के लिए भी ये एक फैक्टर था कि हाउ विल मैनेज एंड उस समय क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस समय मेरे पास तो ऑब्वियसली आई
succumb to the pressure and decided that कि eventually मेरे को पढ़ना है पर तो मैं कहीं से भी लूँगा. So I accepted the fact that I would do a distance education or a course uh, from Devgar only, and then I enrolled to like in the Gandhi National Open University, and I chose political science as my major. तो दो चीज़ें हुई. तो पहले मैं उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, नेगेटिव चीज़ें भी हुई. तो पॉजिटिव ये हुई कि ज़्यादातर मेरे जो जैसे जब आप कन्वेंशनल कोर्स करते हो तो यू आर having a schedule and you are supposed to take classes and that occupy your most of the times and उसके वजह से आप you are in a structure actually. तो first of all मेरे को obviously it was a not a new thing for me. तो obviously again आपको डिस्टेंस एजुकेशन में आपको एक फ्रीडम मिलता है टू डिजाइन योर लर्निंग एंड योर प्रोसेस एंड योर स्पीड अकॉर्डिंग टू योर विश. बट इवेंचुअली वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे चीज़ों को पढ़ने के लिए, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि वहाँ पे आपको सोशल bonding and social interactions उतने नहीं होते हैं. Like when I used to talk to my friends who were like my classmates in my school also, they used to say that कि वहाँ पे मेरे it's not about the curriculum and syllabus and what is being taught. It was more about social interactions actually, and obviously that was a thing which helps you to grow your personality. उसमें पढ़ाई के अलावा आपको अलग अलग इवेंट्स होते हैं, आपको लार्जर वर्ल्ड में आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. तो दैट वाज समथिंग आई वाज मिसिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे को टाइम मिला तो मेरे को it gave me the opportunity to read things from various perspective, not in a very structured way, but again I had more time to study things, and I love books. Again, I remember during this period I actually read around 300 books, and obviously मैं books खरीदता था और उसको मतलब कि मैं अपने देवघर में भी मेरे अच्छे खासे बुक्स हैं वहाँ पे, एंड आई हैव दैट कलेक्शन ऑफ दैट बुक्स अलग अलग डोमेन्स में, नॉन फिक्शन, फिक्शन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत बार जब आप इनफॉर्मल वे पढ़ते हो तो यू डोंट गेट एक्चुअली स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ा तो इट वाज अ वेरी आई वुड से दैट इट वाज misguided missile kind of thing where I was enjoying reading and understanding thing, but I was not getting any counter or having that discussion with the people. Obviously, though was a um, that was a drawback of that phase. And then again I started feeling the same feeling which triggered me to have a thought that if I have to actually eventually do job or do something concrete, I need to have a evolution and I need to choose something better. तो जब मैं बैचलर कर रहा था तो इवेंचुअली मैं obviously the family also was of the opinion that I should prepare for UPSC again. तो ऑब्वियसली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बट ये भी मेरे को समझ में आ रहा था कि जो मैं जो ये चूज कर रहा हूँ, इट वाज नॉट माय डिसीजन. अगेन इट वाज एनफोर्स्ड बाय समबडी एल्स, एंड जो एक्सपेक्टेशंस वर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था. तो
तो लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर चलो ये यूपीएससी भी करनी है तो मेरे को पहले एक ऐसा कोर्स करना पड़ेगा मेरे को, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस आपको गैदर करना पड़ेगा जिसमें आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पर समझोगे, क्योंकि बहुत बार जो आप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हो वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती है, एंड दैट डज नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द world. And eventually अगर if you know serving the administration is the thing, you need to actually experience the real life consequences, वो चीज़ मेरे को समझ में आई। एंड फिर तब मैंने डिसाइड किया कि चलो यार पब्लिक पॉलिसी का कोई कोर्स करते हैं, बिकॉज दैट वाज कैच फ्रेज एट दैट मोमेंट। एंड उस समय नया नया तो लाइक 2017-18 के अराउंड के टाइम, उस समय लाइक it was a buzzword, but again I've you know did some research regarding that। तो मैंने रिसर्च किया तो मेरे को फाइंड आउट हुआ कि वहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस नाम का एक कॉलेज है जहाँ पे आपका पब्लिक पॉलिसी का कोर्स है। एंड वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स थे, obviously 56 of them. The most popular was HRM, obviously. So management was never a thing which I considered. So obviously I wanted to be in the public policy course, क्योंकि उसका वहाँ पे आपका यूपीएससी से भी रिलेटेड है, एंड दैट आल्सो गिव मी द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ policies and society, and how to bring about real change from top down. That was my understanding कि आपको ये करना पड़ेगा। तो देन अगेन वहाँ पे भी चूज करने का जब आता है, जब एप्लीकेशन दे रहे हो तो यू रियलाइज कि देयर आर 3 ऑप्शंस यू कैन चूज एट दैट मोमेंट। उस समय स्ट्रक्चर लगता है, अभी आई थिंक टिस्नेट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, बट उस समय जो था कि आपको पहले टेस्टिंग देना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न राउंड है, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड है। तो पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये था कि पब्लिक पॉलिसी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और 3 प्रेफरेंस लेनी थी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाज पब्लिक पॉलिसी, second was the urban policy, which was actually in Mumbai. So Hyderabad, Mumbai, and then the third preference was disability studies. Again, disability studies मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था डिसेबिलिटी को लेकर, तो ऑब्वियसली दैट वाज थिंग इन माय माइंड कि चलो यार अपना एक्सपीरियंस जो है वो तो ठीक ही है, बट क्योंकि मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड उसमें नहीं बना है, तो एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और डिसेबिलिटी को मतलब कि समझने के लिए मैंने चूज किया। बट अगेन दैट वाज द थर्ड प्रेफरेंस अगेन, क्योंकि बहुत बार उस समय तक आई नेवर हैड दिस आइडिया दैट कि डिसेबिलिटी इज माय फुल आइडेंटिटी। मेरे लिए था कि पब्लिक पॉलिसी को अगर मैं जानूंगा तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी rather than sticking myself to one identity too। And in a way I would say that I will say that due to my education till now, obviously I had some issues with the structure and the thing, but more or less I was into a mainstream education system। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि आपको अगर कुछ चेंज लाना है तो आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी के, बट and rather than focusing on one identity and community itself। तो मैंने पब्लिक पॉलिसी के लिए किया। I first gave the online test, I cleared that, then I got into the written round and then the person interview round। और जब रिजल्ट आया तो I was selected actually in urban policy, the course which was in Mumbai, which was my second preference। So that gave me the confidence, okay, and that gave me the opportunity to explore। And obviously the Mumbai was a big city for me and I never ventured into that। तो बहुत बार मैंने पापा को बोला कि चलो यार वहाँ पे तो मेरे को हॉस्टल का फैसिलिटीज भी मिल रहा है, तो लेट्स
गो देयर एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सोशलाइजेशन का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आई वुड explore things. So that was my understanding, and I chose that course and I came to Mumbai. So when I came to Mumbai in this and I got the campus hostel, तो अब पहले तो इट वाज अ कल्चर शॉक नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर था, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि बाकी कॉलेजेस के बारे में नहीं था। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कि वहाँ पे रैगिंग होगा, वहाँ पे लोग जो है सीनियर जूनियर के बीच में रैगिंग होता है। दैट वाज अ कल्चर व्हिच वाज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, बट जब मैं वहाँ पे गया तो दैट वाज नॉट द केस। रैगिंग का आपको कल्चर वहाँ पे नहीं था। और फिर दूसरा है कि जो आपका जितना डाइवर्सिटी था वहाँ पे with respect to various communities and various groups at that moment, वो I think I would say that कि in terms of gender or also in terms of caste and in terms of other things also, I found that that was a more inclusive space than I ever could have imagined. So that was my first exposure कि एक inclusive space कैसा होना चाहिए। But at the same time ये भी था मेरा कि I didn't have bad experience. I didn't have any bias towards any particular group or ideology in that way, or trading uh, ट्रेनिंग एज ए एडलॉग, और लाइक जब आप बैचलर्स में आप जाते हो तो बहुत सारे कॉलेज में आप उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स में रहते हो, तो यू गेट इन्फ्लुएंस विद वेरियस स्टूडेंट ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स। तो वहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होता है, बट क्योंकि वो मैंने बैचलर्स में स्किप किया एंड ऑब्वियसली आई टू हियर फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि आपका ये अंडरस्टैंडिंग है, एंड ऑब्वियसली द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री आई वाज फॉलोइंग एंड आई वाज डीपली into that, and obviously I had my opinions, strong and weak opinions, whatever I could find in the internet, it was there. I was very much aware of the political scenario over there, but मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि I was never committed to any one ideology, whether be it left or right. But so my I went into that space from a very open point of view. But obviously I am someone who prefers to have open engagement, and I was very much open to ideas, and basically I wanted to learn about things rather than being in a particular ideological framework, and then I wanted to understand and think from a comprehensive perspective also. So yeah, I went with the open understanding, and obviously I didn't had a lot of lived experience, which was uh, certain example. For example, I I understood what are the challenges of caste, uh, what are the issues of caste. I was aware of those things, and in fact, in my school days also, I found certain, like for example, there was a friend of mine who was coming from a CST background, and obviously the discrimination was not very apparent, but it was obviously very subtle in a way. But again, I didn't have that very strong experience of those things. Obviously, I come from so-called upper class caste in that way, so I didn't have that understanding. तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स देखे जहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट था, एंड ऑब्वियसली पीपल दोज वर कमिंग फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स, एंड देयर वर मेनी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और बिकॉज मेरे
मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑब्वियसली आई हैव अ सर्टेन प्रिविलेज जो कि बहुत सारे कम्युनिटीज को नहीं मिलती। तो उस हिसाब से मैंने फिर एक्सप्लोर किया। मैंने अंबेडकर को पढ़ा, मैंने क्लास स्ट्रगल्स को पढ़ा, and obviously I was, since I was a student of political science, I studied those things in theoretical domain, but practical domain में I was never, in that sense very much decided that I belong to this category of people or this ideology. So I explored as much as I could and to understand things. And from a world, like there was a LGBT movement also, LGBT group, and I actually went into that and I tried to understand their point of view also. And then obviously uh, this might be controversial, that but even I explored the right wing side also, that why they what they actually truly represent and what are their issues and what are their worldview. तो बातें तो ठीक है कि obviously I came from a privileged background, so I could have that access to explore things in a more nuanced way and more non-judgmental way. But again, I understand those who are coming from a particular community caste, that creates a hindrance. For me, that entity I could relate to disabled community only in that way, because I found that even though there were groups who were disabled, they were not very united in that way. So disability is something which is uh, very diverse, and they come from various social backgrounds. तो बहुत बार आपका डिसेबिलिटी का जो आइडेंटिटी होता है वो बहुत ही डिस्पर्स होता है, and that was also in my case also. But I had this uh, realization that कि बाकी सब सोशल ग्रुप्स का मतलब कि अच्छा political mobilization था, and there were groups, there were discussions, but when it came to like disabled people, they were not very much united in that way. Also, man, like again, I had that this naive understanding of why they can't be, it can't be done. So obviously, I started working towards that कि चलो यार मतलब मैं जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बात करूं, अलग अलग डिसेबिलिटी के ग्रुप्स को मैं बात करके try to understand their issues and bring them in the common platform actually. तो मैं जैसे वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस के साथ बहुत सारे पीडब्ल्यूडी एक्शन ग्रुप्स इसके साथ काम किया है ना. इनफैक्ट I would not say that I was the only guy. There were many students, many disabled who were like interested to pursue that. And तो मेरा पहला जो एक्सपोजर था regarding mobilization person with disabilities, because even though I had my personal experience, but I also realized कि पहली बार मैंने देखा कि आपके अलग अलग डिसेबिलिटी के जो दो लोग हैं उनके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना इट इज़ वेरी समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि आपका बहुत बार कंट्राडिक्टरी होता है. बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट RPWD एक्ट, and because I was obviously a student of urban policy, I also found out that even though the course was very very good in a way because it included the technical and non-technical aspect very much. Like for example, it had component of urban planning, but it was started with the theoretical understanding of urban policy and urban phenomena and urbanization, things like that, poverty, and um, the teachers were quite experienced in a way to urban housing, poverty, and I enjoyed initially, but eventually I realized when it came to disability, again it was
not there in their agenda actually, and none of the courses included that aspect. So obviously, I thought that it's better to do something new rather than trying to fit in again. So, um, so I decided to do research on built environment and inaccessibility from a social and political मतलब कि framework, because again I when it comes to like build environment and build structures, I was not coming from technical background, so it was not like um, it was not very productive for me to venture into things which I don't understand. But again, I understood that I need to interact with technical people also. So I went. Actually, I did my internship in an architecture firm. Actually, in I think first year. So from there, I understood that there's a thing called harmonized guidelines, which actually underpins the building codes and building guidelines how to build a accessible space, and that was my first exposure to those kind of things, and it was obviously a technical document. um, and but when it came to like social understanding and things like that, so I could see a divide, that there is a divide between the technical people, those who are coming from like architecture background or engineering background, and obviously those who are coming from typical sociological background, who are well versed with theoretical underpinnings of social phenomena and disability, things like that. There was disability studies in this, and there is actually, but it was much more limited to social work and understanding disability from a social perspective, and it was never um, about the inclusion of टेक्निकल एस्पेक्ट तो। और दूसरी बात क्या थी कि बहुत बार जब मैं आर्किटेक्ट से बात करता था, तो बहुत बार because they are even though they those who I work with, they erogated universal design, but again they were having very skewed understanding of uh, actually the social reasons actually. There were few exceptions also, and I was fortunate to work with them. Uh, in fact, there were some certain people, but in practice, they were not in. There were few engagements जो डिसेबिलिटी मूवमेंट को आप एक जो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से समझनी चाहिए कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझना पड़ेगा और फिर सोशल एस्पेक्ट भी समझना पड़ेगा. That was lacking again. And then when I talk, when I actually delved into the research, um, actually my topic was basically to inquire into the social political um, understanding of causes of inaccessible environment, because it was not merely about certain guideline not being followed. It was also do with the social attitude and also the political structures we are embedded in. तो बहुत बार बहुत सारे लोग अभी भी जो है दे कंप्लेन दैट कि इनएक्सेसिबल मतलब कि environment है, and it is not very uh, they don't follow the guidelines and things like that. But again, we have to understand that everything exists in a
social background. If the society and the politics is not supporting uh, inclusion, or talking about those things, or having mainstream, it is upon us to make it make mainstream. And sometimes it is tedious work also. It does not it is not very easy to just expect systems to work actually. तो मैंने जब ये रिसर्च चालू किया, तो मैंने अलग अलग डिसेबिलिटी का के लिव्ड एक्सपीरियंस को भी डॉक्यूमेंट किया कि उनका एक्सपीरियंस क्या है while accessing various built environments. And I started with a very ethnographic way. I actually delved into the history of it, ki how they started and how um, they faced various architectural and social biases, which actually um, shaped their life choices. But again, that was not never documented in a way before. So I had a ethnographic study, and I in fact included my own experience also in my first chapter, in the first chapter of the dissertation, where I uh, explored my understanding of disability and how it evolved and how it interacted with the choices I made in the future. So बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने पहली बार पढ़ा, जैसे various models of disability and how it is like intersects and how it engages with the society. तो मैंने ये रियलाइज किया कि जितने भी मॉडल्स बने हैं डिसेबिलिटी को समझने के लिए, तो इट इज कमिंग फ्रॉम अ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आज भी मैंने ये देखता हूँ कि जितने भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है डिसेबिलिटी को लेके, वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। और बहुत बारी इनको जब आप लोगों को समझाते हो, तो उनको आपको समझाने में दिक्कत आती है अगेन, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वैसे ही लेनी पड़ती है, और वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो कमिंग बैक टू द रिसर्च, तो मैंने वो समझा। फिर देन आई स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ ableism, how it shapes our understanding, internalized ableism, how like in a way I found that in fact I have also have this thing of internalized ableism, that where instead of asking and instead of questioning things, sometimes those who are not having that extent of disability, we try to fit in, kind of. That is a natural response to things, and try to not talk about disability thing, and just be, try to be good in social, you know, understanding and social frameworks, and not question proof. Ableism was something which I discovered, एंड देन आई ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि अगर आप एबलिज्म की बात करते हैं, तो आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि आपका सोशल पोजीशन क्या है, उसको क्वेश्चन करने का वो भी। इट वाज अगेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वाज कमिंग फ्रॉम वेस्ट, पर्टिकुलरली फ्रॉम अमेरिका। सो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे आपको एक्चुअली में उसको डायसेक्ट करने के लिए आपको लिव्ड एक्सपीरियंस चाहिए, उसको आपको फ्रेम करने पड़ेंगे उस हिसाब से। तो देन आई डिड रिसर्च, एंड देन most importantly, when I was talking from a lived experience point of view for personal disability, it was not enough for me to include various disability only. So so I interacted with various architects also. I took their point of view also, and those particularly those who are working in industrial design aspect, and their experience and their challenges.
So what they said basically was again the same. There are statutory bodies, there are guidelines which they fought to actually to bring in actually, and it took a long struggle to reach that state to have those guidelines included. But again, it was again a copy paste job initially. अगर आप harmonize guidelines हो या 16 का देखते हो तो it is more of a copy paste from ADA guidelines which was in America. तो again बहुत बहुत चीज़ें हैं वो बहुत ही डिटेल में मतलब कि गाइडलाइंस थी बट इट वाज नॉट मैंडेटरी for buildings to follow. There are many bylaws and there are many building bylaws actually at the state level, and there was various bodies which didn't include those guidelines, and those guidelines were very sometimes the general from a general point architect point of view they were saying that it was very utopian kind of thing, and at best what we could do was like having kind of retrofit thing where, and having a comprehensive change of the design of the building. तो तो ये चीज़ें मतलब कि जो those who were universal design architect, they were also pointed out कि it's it's good to have that in theory, but again when it comes to practical things, sometimes they have to like compromise. Like again, it depends कि आप obviously there are guidelines, there are certain areas where things are accessible. Now it is coming, it is getting more accessible, but by that time it was not in popular um, discussion that की accessibility होनी चाहिए. Obviously the accessible India campaign helped, but that was in much later time actually, and it was sometimes it was not very much till this time also we don't have a set deadline where you can say that the public places which are government spaces are accessible in that way. तो मेरे को ये समझ में आया कि जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत बार सिर्फ टेक्निकल डोमेन में बात करते हैं, और चीज़ जब तक सोसाइटी को समझ में नहीं आएगी तो वो कम्युनिटी लेवल पर पर्कुलेट नहीं करता है. तो ये मैंने रियलाइज किया, तो उसमें बहुत सारे इंटरसेक्शंस थे. लाइक एक्सेसिबिलिटी जब इशू आती है तो पॉलिटिकल वेल भी आती है, फिर सोशल सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन डिमांड्स एक्चुअली में. और अगेन व्हेन अ स्पेस इज बीइंग made accessible, how do keep on using those spaces? That is that is also important. It is not only uh, um, thing that once you make the places accessible, people will use it, and it will be like happy ending, and everything goes fine. This doesn't work like that. You have to keep using those spaces, and keep on improving those things. So that understanding was very clear to me कि जब तक आप सोशल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बात नहीं करोगे तो एक्सेसिबिलिटी की बात सिर्फ थ्योरी में नहीं हो सकती है, एंड उसमें आपका अवेयरनेस होता है. इवन टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स आर नॉट अवेयर ऑफ those accessibility design concepts, and they are not ready to like even incorporate those things. Actually, again, it is a game of supply and demand. Most of the users are non-disabled, so they will not
मतलब कि get the demands from private, from a customer point of view. So their focus mostly remains thing is that it is not, it is not demanded by the user. So why to make it accessible from from a private point of view? But at the same time जब हम larger कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे पास गाइडलाइंस है, बट अगेन बिकॉज it is not mandatory, or like if there is no penalization, so no government building is like, even if you make it accessible for the government building, it is not able to most of the private spaces like malls and things like that. It is like more of a this thing, if they get interest in accessibility and things like that, it is upon their wish, and it's some penalization had to be done. I think I feel now some structures are there, but it's not very rigorous, and it's very difficult to make those things rigorous. Also, because when it comes to private domain, this is actually the property of that company or that individual. तो तो ये मैंने रियलाइज किया ये कि बहुत सारे जगह पे हम लोग इंटरेक्शंस नहीं करते हैं। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो शायद हम एक एलिट ऑडियंस को कैटर करते हैं, और जब हम और चीज़ों की बात करते हैं तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल उसके बाद आई मूव फॉरवर्ड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल कि व्हेन आई एक्चुअली पास्ड फ्रॉम माय मास्टर्स, आई इट वाज कोविड पीरियड 2020 का बात है, तो ऑब्वियसली इट वाज अ टफ time to get jobs. So obviously I had this academic, background, but again I was struggling finding job. In the meantime, I also joined MPhil actually, और वहाँ पे MPhil में I chose development studies. In that also I chose to research on political economy of disability and the body. So again, that my focus was that to understand disability from a development point of view. But again, जब मैं फिर ज्वाइन किया तो आई रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द क्लासेस वाज कमिंग फ्रॉम इट वाज ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास होने की वजह से बहुत बार जो आपको एंगेजमेंट मिलना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, वो मेरे को नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि सिंस इट वाज अ कोविड पीरियड, most of the uh, scholarships, like for example in my case, it was JRF, it was not coming in time actually. तो मेरे लिए financial भी एक constraint था कि obviously after doing masters you are expect to earn also. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा dilemma था कि if I continue doing this, I might be wasting time actually. Again 2 years and having those and was not giving me the fulfillment of having a rigorous discussion. It was I was in Mumbai, obviously I was in Mumbai, but it was that I was in a room and doing attending classes in online fashion, and I didn't enjoy it actually. I I prefer to have in person class where I can interact and I can engage more in a more natural way. So that was my preference. Again, I would say that it is not consistent with people. Other people might find the the um, the online component much more useful. Like for example, I had some certain interaction with my visual impairment friends. They said that okay, it is useful for them. So it was my experience. Um, the online thing is not working for me. Then I decided to switch,
And again there were I worked with various organizations. Um, Again with relation with the harmonized guidelines and those understanding those things only. But again डिसेबिलिटी और इसके ही अराउंड मेरा जितना भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट था उसी डोमेन में हुआ एंड देन फॉर ब्रीफ पीरियड आई आल्सो जॉइन organization called Caste Trust, which was in Pune. So I worked with them for 4 to 5 months, where I, actually interviewed various persons with disabilities and experts in disability field, and actually brought out their interviews and their struggles and their like struggle in specific to like COVID period also. And so that was my first professional experience. But after that I realized कि मेरे को अपना खुद का भी independent कुछ करना पड़ेगा. I didn't wanted to work under somebody. So I actually started, searching for those opportunities. And then I found out that the NCPDP actually had, brought out a fellowship, which actually gave you obviously the financial uh, monetary support also, and you could actually do your own research based on your own interest. So that I found that was a very good opportunity for me to engage with the disability sector in much more structured way and a much more professional way. So, but again, that was at that moment. At that time, I was in Mumbai. तो मुंबई में सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि it was a very isolating place because at that moment I couldn't go outside. I didn't have the support of any family member. So I decided to go to Devghar and pick up this fellowship journey. तो मैंने ये फेलोशिप स्टार्ट किया. तो दूसरा मेरा जो स्ट्रगल ये था कि एक्चुअली में क्या टॉपिक लेना चाहिए फेलोशिप में. ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि करने का तो बहुत कुछ कर सकता था क्योंकि मेरा बिल्ड इन्वायरमेंट को लेके एक था कि उसका भी हम कर सकते हैं. बहुत सारे चीज़ थी जो नई चीज़ें थी, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव मेरा ये भी था कि एक्चुअली में देवघर के जो कम्युनिटी मेंबर्स जो डिसेबल कम्युनिटी है उनका क्या मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है और ऐसी टॉपिक क्या है जहाँ पे मोबिलाइजेशन पॉसिबल है. तो मैंने सर्च किया कि ज़्यादातर लोग जो डिसेबल हैं उनका क्या इश्यूज है अगर देवघर के कॉन्टेक्स्ट में. तो मैंने फाइंड आउट किया तो ऑब्वियसली it boiled down to disability certification and pension and getting the government schemes. Okay, most of the people were coming from that background. So things like accessibility and employment and self-employment was not a big concern for them. I would not like have a give a blanket statement कि यही उनका aspiration था, but that was the majority thing which I decided to explore the disability certification and pension. So I realized that there is very less academic work which has been done in this field, and in terms of field work also, there is very less data. क्योंकि जब हम डेटा की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारे पास 2011 का सेंसस है जिसमें डिसेबिलिटी एक क्वेश्चन था, बट इट वाज नेवर वहाँ पे भी बहुत सारे मेथोडिकल इश्यूज थे. रिसर्च मेथड्स जो थे वो प्रॉपरली यूज नहीं किए. तो दैट वाज अ वेरी ओल्ड डेटा टू रिलाई विद. तो आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे
केसेस में डिसेबिलिटी को लेकर अच्छा डेटा हमारे पास नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे पास डेटा ना होने की वजह से हम लोग एक्चुअली में कुछ भी पॉलिसी फ्रेमवर्क उसमें बना नहीं पा रहे हैं। एंड व्हेन इट केम टू लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन, इट वाज मोस्टली कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग कि ओके, मतलब अगर पेंशन दे दो तो ऑब्वियसली पीपल find it more tangible and more relatable to that continues. And then so occasionally, आप मोबिलिटी एड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कभी कभी आप स्किल ट्रेनिंग करवा दो। तो दैट वाज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक्चुअली। बट अगेन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि पेंशन को आप नेगेटिव वे में देख लो, बट समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बेसिक थिंग आल्सो। बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे जो मतलब डिजेबल थे उनको एक्चुअली में वहाँ पे वो 1,000 रुपये की दरकार थी। लाइक फॉर एग्जांपल झारखंड में 1,000 रुपया पेंशन है, तो वहाँ के रूरल कॉन्टेक्स्ट में वो 1,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था। और क्योंकि अगेन रूरल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो बहुत चीज़ें आपको फिजिकल डोमेन में करने को होती नहीं है, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए। एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो रिलेट्स टू द डिग्निटी, हिज डिग्निटी इन द फैमिली। क्योंकि आप पैसे मिलते हैं उनके नाम पे तो एटलीस्ट दैट गिव्स हिम द रिस्पेक्ट, ओके एटलीस्ट ही इज गेटिंग समथिंग। तो वो चीज़ भी मैंने समझा। तो आई डोंट सी पेंशन एज अ गुड और बैड थिंग, बिकॉज स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई वाई पीपल आर डिपेंडेंट ऑन पेंशन। बट द थिंग इज दैट कि once you don't go there and you live there and understand that कि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर्सन डिसेबिलिटी को देखे है नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो बेसिक जो हमारा जो एक नीड है पेंशन का वो वहाँ पे वो स्टैग्नेट करता है। मतलब वो चीज़ दैट इज लाइक काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ ड्रग, दैट इज द ओनली थिंग विच कीप देम गोइंग। तो आज भी मेरे जितने भी डीपीओ मेंबर्स हैं वहाँ पे जब मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैंने देखा कि वहाँ पे पेंशन को लेके ही जब आती है तो एक महीना में मीन्स नो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ इवेंट कि मतलब हाँ पेंशन आ गई, दैट बिकम्स अ बिग इशू। लेकिन उसके बियॉन्ड क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और एक विजन भी नहीं है, मैंने ये रियलाइज किया कि इवन दो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो कि मतलब कि उससे आगे बढ़ सकते हैं, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एटीट्यूडनल। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या फिर कुछ और बात करते हैं तब तक आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी। वो जो इंट्रिंसिकली जो फैमिली में आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी देने को इनकरेज करती है वो जब तक नहीं होगी तब तक मोस्ट ऑफ पीपल विल कीप will be satisfied with the basic thing only। तो पेंशन तो एक हो गया। तो तब मैंने रियलाइज किया कि चलो कि आप मैंने डेटा तो एक्यूमुलेट किया एंड इट वाज कमिंग अराउंड दैट कि इवन दो पीपल टॉक अबाउट पेंशन एंड सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट if I have to like be specific, I actually did a research in two gram panchayats which comprise of 16 villages। वहाँ पे मैंने देखा कि तकरीबन तकरीबन 64% लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद 83% लोगों के पास पेंशन नहीं है। जो और जो ऑफिशियल डेटा था मतलब कि उनके पास तो हर एक दोनों ग्राम पंचायत मिला के 40
विकलांग थे और उनको पेंशन मिल रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इनफैक्ट they found a loophole in the system and actually they were getting mentioned in a wrong way also, वो भी था। माल प्रैक्टिस भी होती है कि आप अगर आप थोड़ा बिजनेस के बारे में जानते हो and if you give some money तो it becomes very easy to access that pension, तो वो भी चीजें थी। तो बट एट द सेम टाइम जो एक्चुअली में बहुत सारे लोग थे उनका सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये था कि उनके पास सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं थी। तो सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं थी तो बहुत बार पेंशन आपको विदाउट सर्टिफिकेशन मिलती नहीं है। तो दैट वाज अ बिग इशू इनफैक्ट, क्योंकि अगेन व्हेन वी टॉक फ्रॉम अ दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू और बड़े शहरों के हिसाब से तो बोलता है भाई पेंशन क्या, या फिर पेंशन या सर्टिफिकेशन क्या इशू, ये तो 20 साल पुराना इशू। बट जब हम वहाँ ग्राउंड पे जाते हैं, जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में बेसिक चीज़ों को लेकर लड़ाई है और उसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं है नहीं, कहीं पुख्ता तौर पे, क्योंकि बहुत बार क्योंकि डिजेबिलिटी जो मुद्दा है वो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जो फोकस है वो नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन झारखंड द डिजेबिलिटी अफेयर्स कम्स अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो सोशल वेलफेयर में तो आपका वुमेन है, फिर एस सी एस टीज है, माइनॉरिटीज है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो उसमें जो फोकस है वो डिजेबिलिटी को लेके बहुत ही डाइवर्ट हो जाता है। तो और ये चीज़ मैंने इनफैक्ट इसमें भी रियलाइज किया कि वहाँ पे जो स्कीम्स, वहाँ पे जो मतलब कि फोकस होता था ज़्यादातर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जिसको कहते हैं। इनफैक्ट इट वाज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल was meant to actually focus more on the disabled community, but again it became a broader body to focus on other vulnerable communities also. तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो वनरेबल कम्युनिटीज का पे फोकस नहीं होना चाहिए, बट डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगेन कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या फिर सोशल मोबिलाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो बहुत बार जो पॉलिसीज अगर बनती भी हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में आप यू डोंट सी द इंटरेस्ट एक्चुअली। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सर्टिफिकेशन एंड पेंशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव एनी क्रेडिबल डेटा कि कितने लोग के पास है, कितने लोग के पास नहीं है। लाइक यूडीआईडी का भी जो like we see that certification UDID becomes mandatory, and now we have seen the Pooja Kirkar case also. About controversy, it has become a point of controversy. But again जब हम पूजा खड़गड़ की बात करते हैं तो वो बस नेगेटिव सेंस में है कि हाँ अब यहाँ पे मिसयूज होता है, so let's make it more difficult to get UDID. That is one aspect that is being done, but that is at the top level. But जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे बिचौलिए हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स देने के दिलवाने के लिए आपसे पैसे लेते हैं, and they actually collide with few private doctors also. I will not specifically say that कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये हो रहा है, but there are many middlemen who don't actually allow things to happen very fairly. तो getting certification and getting that 40% का benchmark, that becomes a big struggle. I mean, that also determines कि whether you will get pension or not. तो वो फाइट होना, जितने लोग हैं डिजेबल नहीं भी हैं उनका भी हो जाना, वो एक दूसरा फैक्टर है। जो वहाँ पे जो कुछ कुछ नॉलेजेबल लोग हैं, है ना, आई वुड से दैट कि जो लीडरशिप
पोजीशन पे हैं, तो उनको बस इंफॉर्मेशन अपने लोगों को प्रेफरेंस देना, उसके वजह से जो आपका जो ट्रिकल डाउन होना चाहिए स्कीम्स का, उतना इफेक्टिव तरीके से होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इनफैक्ट स्ट्रक्चरल वे में, क्योंकि अगेन कोई ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मामले में कि आप डॉक्टर को अकाउंटेबल ठहराओगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहराओगे। देयर इज नो लाइक क्लैरिटी इन दैट एस्पेक्ट। तो बहुत बार जो ये चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं होती प्रॉपर तरीके से, मोबिलाइजेशन नहीं होता है। अगेन द mobilization depends on the uh, you know uh, the social power of the community also, कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन कास्ट, उनका जब डिस्क्रिमिनेशन होता था तो अगेन जब तक आपका पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हुआ उसको लेके, और वहाँ के उसके वहाँ कम्युनिटी के लीडर्स कास्ट बैकग्राउंड से नहीं आए, तो उनका भी असर्शन वाज वेरी डिफिकल्ट। But when we talk about disabled, we don't find political representation that way. बहुत सारे लोग revolutions की बात करते हैं कि there should be like revolutions, but I feel that is my point of view. It can be challenge also, and I find that कि this platform is for that only कि अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हो। और तो आई फील दैट कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जब हम स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की बात होती है, विच आई एग्री कैन बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बट it can't be like solution itself, because again जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, I'm not very sure. It has to be complemented with data, proper data, and proper real-time data, because when it comes to um, disability, हम लोग डिस्पर्स्ड ग्रुप हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक जगह पे जाओगे और बहुत सारे डिसेबल्ड आपको मिलेंगे, तो यू डोंट फाइंड इनफ डिसेबल पीपल एट वन प्लेस। तो उनका यूनिटी और उनका इशू को लेके भी जो चैलेंजेस है वो यूनिक है। I would somehow relate that to with the LGBTQ community, but again, when it comes to LGBTQ community, at least they are small in numbers, but they are very vocal, and their issues are being documented in a proper way. But when we talk about disability, वहाँ पे अलग अलग डिग्रीज आती है ना। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ disability, you don't have face the same problem which a wheelchair user, or who's having complete disability or multiple disability might face, क्योंकि इतना सारा डाइवर्स चैलेंजेस है। तो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके एक यूनिटी नहीं मिल बनती है, कि कॉमन पॉइंट, कॉमन ग्राउंड नहीं मिलता है जहाँ पे आदमी एग्री कर सके। तो वी सी दैट कि इन disabled community also there is like visually impaired having, there are different groups, and pressure groups also, NGOs working for them, and that is also true with various locomotor issues also। तो ये चीज़ है कि जब हम लोग क्रॉस डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग एवरीवन in the same umbrella, and it is not necessary also, but sometimes when we see कि PWD एक्ट का स्कोप इतना बड़ा है कि इस टाइप की डिसेबिलिटी इंक्लूडेड है उसमें, तो अब इतनी डाइवर्सिटी में आप यूनिटी कैसे लाओगे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जब ये फेलोशिप किया तो मैंने ये चीज़ को समझा कि ग्रास रूट में हमारे पास डेटा की कमी है, मोबिलाइजेशन की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है जो कि एक्चुअली में पॉइंटेड एडवोकेसी कर पाए।
तो बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी रियलाइज किया कि एट द पर्सनल लेवल मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एक्चुअली. Obviously, I can't be one of them because I don't come from the community. Although I have certain experiences of my personal disability, but that does not make me one of them. क्योंकि उसमें एक क्लास का मतलब कि आपको एक डिफरेंस दिखता है कि no matter how much I try, I will not be able to understand and be there to understand their things. So at best, I tried to document their issues and tried to form a report, paste a report, which you can find in NCPEDP website also. And in meantime, I also developed this website called Project Samajh, where I write articles about the issues, uh, mostly related to disability certification and pension. तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है ना. वो आई थिंक आई फील वो उतना रिगरसली आई एम नॉट फॉलोइंग इट एंड एक साल हो गया लाइक there is no new thing, a new article that has come. I need to work on that क्योंकि I was also caught up with a lot of other things because after fellowship I also realized कि I need to broaden my scope. और जब आप थर्ड टियर सिटीज में काम करते हो आप रियलाइज करते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत लिमिटेशंस है आपको क्योंकि बहुत बार जब आपके पास एक फ्रेमवर्क और आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन है ना. और मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं कम्युनिटी में काम करता था तो दैट वाज अ most of people will identify you as part of the larger administration, which was again a problem कि my job was not to मेरा काम ये नहीं है कि मैं सर्टिफिकेशन बनाऊं या फिर पेंशन दिलवाऊं. तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना इम्पोर्टेंट. लेकिन क्योंकि अगेन वो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क रिजिड नहीं था तो बहुत बार आपको इंडिविजुअल लेवल पे जो आप कर रहे हो एक दो लोगों के लिए वो उनको कम्युनिटी लेवल पे लगा कि एक दो लोगों को बायस को पक्षपात कर रहा है या बायस्ड है कि कुछ लोगों को कर रहा है कुछ लोगों को नहीं कर रहा है. तो ये चीज मैंने फेस किया. तो फिर मैंने रियलाइज किया being focused towards that I need to also upskill myself and look for opportunities which you can contribute in a more effective way. तो ये एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ फील्ड का वो इम्पोर्टेंट था. इनफैक्ट आई वुड से दैट कि मैंने इस दरमियान में टॉपिक चेंज भी किया. इनफैक्ट आई वुड से दैट कि सर्टिफिकेशन और मतलब कि पेंशन के अलावा मैंने फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाई मशरूम प्रोडक्शन को लेके. तो आरसीटी एक मतलब की बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है जिसमें आप मतलब कि लोगों को आप स्किल अलग अलग को लेके आप ट्रेनिंग करवाते हो. और इनफैक्ट ये चीज़ होते रहती है मतलब कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आरसीटी आपको मिलता है. तो वहाँ के लीडिंग बैंक जो होते हैं वो उनको लाइक फंड करते हैं एंड दे हेल्प देम फाइनेंशियली इन दैट वे. तो दैट वे आई फॉर्म्ड ग्रुप. मैंने ग्रुप फॉर्म किया 25 लोग आ भी गए और वो लोग वहाँ पे मशरूम प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दिया. उसमें से आई वुड से इट वाज अ सक्सेस आल्सो बिकॉज 25 लोग आए एंड आई मेक श्योर दैट कि जो वहाँ के उस समय के
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो थे वो वहाँ पे आए, वेरियस वहाँ के रीजनल मैनेजर थे तो SBI के वो भी थे। तो दैट वाज अ सक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि एक्चुअली में जो मेन चैलेंज है वो मतलब कि ट्रेनिंग के बाद मैच करता है कि जब आपको एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो दैट इज अनदर स्ट्रगल ऑफ द ओन। एंड वो सक्सेस करेगा या नहीं करेगा वो आपका इंडिविजुअल विल पे भी है कि उसका खुद का मतलब कि रिस्टिंग एबिलिटी कितना है, कितना वो परसिवियर कर सकता है। तो ऐसे एक बंदा है जो सोनाठाड़ी, जैसे सोनाठाड़ी जो मैंने जो ब्लॉक में मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें एक लड़का है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो ट्राई कर रहा है। बट अगेन वहाँ पे भी मैंने रियलाइज किया कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है वो उतना लाइक अकाउंटेबल नहीं है, तो बहुत बार आपका वहाँ पे जो लोन्स का प्रोसेस है वो उतना ईजी नहीं है। But again, it's not about also the loan taking process. It's also कि आपका खुद का भी जो मतलब कि जो इनपुट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी डिपेंड करता है। तो आई फील नाउ आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन बाय एवरीवन। उसके लिए पर्सनल कैरेक्टर भी मैटर करता है, एंड मेनी अदर थिंग्स विच डिटरमाइन कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। बट एट सेम टाइम मैंने ये प्रोसेस करने के तो मैंने ये जाना कि चेंज पॉसिबल है, बट अगेन फॉर अ सस्टेन चेंज आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। आपको मतलब कि एक्चुअली में उनको कॉन्स्टेंटली गाइड करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसी दरमियान मैंने ये भी देखा कि बहुत बार बहुत सारा इनपुट होने के बाद भी चीज़ वैसे नहीं आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि rather than focusing on one person or two-person, I should be talking about broader issue also. तो वैसे मैंने डिस्कशन जो है मतलब कि एक्चुअली प्रोजेक्ट समझ के के ही प्लेटफॉर्म से चालू किया। तो उसमें मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया, तो उसमें मैं जितने को फेलोज थे एनसीपीडी फेलोशिप में, तो उसमें मैंने क्लाइमेट चेंज को लेके, एक्सेसिबिलिटी को लेके अलग अलग फिर उसको इनवाइट किया। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट थिंग्स। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब तक आपका क्रॉस इंटरसेक्शनल वे में आप लोग नहीं वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो इफेक्टिव तरीके से हम लोग डिसेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि मेरा जो इंटरेस्ट ये है कि आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग story, documenting stories. That is something which I find that it is my forte, and which I don't want to, actually improve upon. तो इसलिए मैं ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल का, उसमें मैं चाहूँगा कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिसेबिलिटी के स्टोरीज को डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट्रीज आए, है ना। और वेबसाइट भी है, चेक इट आउट। उसको भी मैं धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि और आर्टिकल्स आए। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि कम्युनिटी का जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, उनका क्या। एंड ऑल्सो आई फाइंड आउट दैट कि प्रोजेक्ट्स समझ शुड नॉट बी लिमिटेड टू डिसेबिलिटी ओनली, बिकॉज सिर्फ जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत बारी ये होता है कि सिर्फ हम लोग अपने ही है ना इको चैम्बर में रह जाते हैं, एंड डजंट बिकम अ ब्रॉडर इशू। तो
जो प्रोजेक्ट समाज है, आई वुड नेवर यू नो यू नो लिमिट दिस टू डिसेबिलिटी। ये मतलब कि बस डिसेबिलिटी पे ही चर्चा हो, इसमें अलग अलग आयाम भी ऐड हो तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिसेबिलिटी को लेके बात नहीं हो पाती है। और इनफैक्ट मैंने ये चीज़ नोट किया कि यूट्यूब चैनल पे भी, यूट्यूब में भी आपका बहुत सारे चैनल्स आपको इशू स्पेसिफिक मिल जाएंगे डिसेबिलिटी को लेकर, लेकिन डिसेबिलिटी का कोई कॉम्प्रहेंसिव चैनल नहीं है जो कि अलग अलग सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज को एक इफेक्टिव तरीके से करता है। अगेन देयर मे बी मेनी रीजंस। तो अ, तो ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, जहाँ पे मैं अपना इफेक्टिव तरीके से लोगों को एंगेज करूँ, अलग अलग टॉपिक लाऊं, है ना, अलग अलग गेस्ट को बुला के उनके एक्सपर्ट्स को प्लेटफॉर्म दूं, and in the meantime also grow my own understanding of disability also. And for that, engagement with the community is very important. So this is my first attempt to talk with you people. It might be very long and boring also because for the first time I am doing it. So obviously there are many technical issues also. The quality of the video is not good and all. I understand that, and it has to be improved. वो बट एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा कि उसको और फ्रिक्वेंट लेवल पे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाऊं, और एक कन्वर्सेशन सीरीज है जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक पे के एक्सपर्ट्स को बुला के अलग अलग आयाम पे मैं डिस्कस करूँ और उसको पब्लिक डोमेन में डालूं, ताकि एटलीस्ट एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और खाली डिसेबिलिटी नहीं, और भी चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, बुक्स, तो हो सकता है कि आपको बुक रिव्यूज में भी मिलेंगे आपको, एंड यू विल सी वेरियस इनफैक्ट various things related to movies also, the movie reviews which uh, which focus on disability or not necessarily disability, it's other social phenomena को भी focus करता हो. So I'll try to bring out such contents. Um, so this is my initiative kind of, and I know that there are many improvements which I need to do before I can make it more professional. Or in the meantime, I expect that I get some kind of support from you people. जो लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, I feel that most people don't have not joined this live, but I feel कि जैसे यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो it is there to and I feel that कि जो शॉर्टर वीडियोस भी आने चाहिए स्पेसिफिक टू सर्टेन पॉइंट्स। तो इसका ही मैं शायद हो सकता है एक शॉर्ट फॉर्म में भी मतलब कि एडिट करके डालूं। तो व्हाट आई फील दैट कि जितना डिस्कशन होगा, जितना फ्री विलिंग डिस्कशन होगा, और कंटेंट जितना डाइवर्स होगा डिसेबिलिटी को लेके, वो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। And if you want to connect with me, I will have put details of my website and my work in the description, and you can check it out. And obviously I would need your support, and although it's a new beginning and it's a fresh start, so वहाँ पे अभी I can't monetize the thing, but eventually जैसे जैसे community बढ़ेगा तो I feel that subscriber base भी बढ़ेगा, I feel. So that is my endeavor, and I will look forward to your feedbacks and how can I improve this. And I'm also working currently on
the gig economy and disability and struggles of gig workers who are disabled, उनका क्या स्टोरी है, नॉट नेसेसरी फ्रॉम माई स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी इट गिव्स, है ना. And there are many new fresher avenues which I need to focus on. और अर्बन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे पॉलिसीज आए हैं कि वर्कर्स को लेके, तो उसको मैं इन सम ऑफ द सेशंस आई विल डिस्कस दैट आल्सो. एंड ऑल्सो लाइक माइग्रेशन हो गया, फिर डिसेबिलिटी को लेके क्लाइमेट चेंज का इंटरसेक्शनलिटी हो गया. इनफैक्ट एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डिसेबल्ड क्या होता है, एंड देयर आर मेनी theories around that which is not very popular among the common masses. तो वो उन चीज़ों को लेके होगी, है ना. Let's see how it goes. Uh, I feel now it is 2 hours. It's like becoming too big to continue, and also एक इंटरेस्ट फैक्टर भी है कि बहुत सारे लोग को बोरिंग भी लगे, तो आई फील दैट कि मैं ये डाल दूंगा. एंड देन आई from next live I will try to be as I'll be I will try to be more precise and professional in that way. But it's more not about that कि खाली प्रोफेशनल डोमेन में ये सक्सेस हो, बट इट शुड बी मोर ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, कि जब तक कम्युनिटी को मैं ऑर्गेनिक वे में नहीं बनाऊंगा और एक रिश्ता नहीं बनेगा, तो आई शुड नॉट बी only seeing this as as a professional thing. And let's hope we keep on discussing things. So do share, subscribe, and if you want to connect, you can follow the descriptions, and you can contact me also through mail. And let's see next session.